and chartered accountancy. So she will now I will not be between you and Palviji because time is limited. So she will give you advice. She will give theory and rules, principles, and huh? And career which you can make in accounting, finance, financial crime. So please I welcome you, Palviji, and students, please take interest because in future nobody can say in which line you will have to go. So it will benefit you a lot. Thank you so much. Thank you, madam, for your opening remarks and for facilitating this particular initiative under the Department of Commerce. And okay, so fine. I think we can start it. Before we start, so thank you, madam, for your time. No, Okay, no, I yeah. will see also Yeah, yeah, after. sure. We will end it around 2:30. Thank you, ma'am. Yeah, sure. तो पल्लवी जी बिफोर वी स्टार्ट आई थिंक इन द इंटरिम जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है you have any queries we will have a Q&A at the end maybe around 125 or 120 तो उसमें आप पूछ सकते हो कुछ आपने जो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म भरा था उसमें आपने जो कुछ क्वेश्चंस दिए हाउ टू फाइंड अ बेटर जॉब how to improve skills how should I get an accountant job how to choose right skill which will help me better out our career somebody has asked a relevant question what is the future of MCOM in forensic accounting and financial investigation the job prospects career prospects so all these particular issues we will be taking up in the this particular topic so now I'll request Pallavi ji to take over and we can take it yeah we can have this session yeah Thank you so much, Anurag ji, and a very good afternoon to everybody. Thank you for joining this session. The field of finance has become very vast, and in today's time, there are so many new opportunities which have come into law, into finance, into so many other fields which people are not aware of. So I'm very happy to share with with all of you this domain which is growing by leaps and bounds. We have a huge community of people, of professionals who are working across various domains of financial crime, and I'll explain to you all. I'll take a few minutes to explain to you all what is financial crime, what kind of compliance has to be done. Most of the time, people think it's a very operational job, but it is not an operational job. It is something which entails a lot of, a lot of attention, a lot of vigilance from your side. It's very interesting how to detect frauds, how to investigate frauds, how to prevent frauds by having the right controls and systems in place, and how to do compliance. Compliance might sound boring, but we have seen that if there have been organizations who have not been compliant, their existence itself is questionable in today's time. So compliance is an important part. And from a team of maybe 10 to 15, what every organization or every bank had, now we've seen that their teams have grown to more than 300, 500, depending on the size of the organization, to an extent that they're more than, like for example, at TCS, they are more than 13,000 professionals are working only in the financial crime team. So they're continuously developing. So whether you're a tech person, whether you're working in technology, you need to develop tech solutions for financial crime. If you're working as a lawyer, you need to understand what kind of investigations are happened when a fraud is committed. If you're a finance professional, you need to understand how financial accounts are being manipulated, what fabrications are done, what are the systems and controls that are in processes. Or even if you're working just as a commerce graduate, there are a lot of fields that you can go into, which I will be running through in my presentation. So just to quickly start, I hope I'm just going to be sharing my screen and I hope that's visible to everybody. okay yeah sure yeah you can just try to share the screen Yes, yeah. Just give me a second. So I hope my presentation is now visible to everybody. yeah it's visible yeah Okay, great. In case my voice, if there is a little bit of a disconnect or something, I'll put my video off for some time. But I think as of now, it's good to go. okay So everybody is able to look at the presentation Tushar Tanish Jay Lakshay Yes, sir. okay fine okay yeah madam you can start So this is a global organization which I work with, which is known as Association of Certified Financial Crime Specialists. It is an international organization which is US based, and we are the exclusive representatives of this organization in India. So now let's come to first, let me explain to you what is financial crime before I go further. So when I talk about financial crime it includes all the crimes that are committed
by an individual to obtain a financial or a professional gain. So it is because of his position that he's holding. He's trying to manipulate things that are in his control and get a financial gain because of greed. So all type of crimes, as we know, are driven by greed. And financial crime, it covers every type of scheme. So आप लोग देखते होंगे कि इतनी सारी पॉन्जी स्कीम्स हुई है, आप पैसा इन्वेस्ट करो, 10 रुपए की जगह आपको 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको 100 रुपया मिलेगा. कई बार हम सोचते हैं कि कैसे ये 100 रुपया देगा, लेकिन फिर भी हमारी ग्रीड इतनी होती है कि भाई 100 रुपया मिल रहा है तो क्या होएगा, 10 रुपया ही जाएगा. लेकिन वो 10-10 रुपया जब 10,000 लोग दे देते हैं, तो जो आदमी क्राइम कर रहा है उसके लिए वो बहुत बड़ा पैसा बन जाता है. So financial crime is a multi-trillion dollar business. It is conducted in a very, very organized manner. It is conducted by people who are who are very educated also. It's a non-violent crime where there's a deceit or a concealment. So something that I'm supposed to be disclosing to you, I'm not disclosing to you. मैं बोल रही हूँ कि मैं आपका पैसा इसमें लगाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपका पैसा कहीं और लगा रही हूँ. So I'm siphoning off funds for different purposes, which I'm not disclosing to you. The industry has grown. The fraud industry is growing rapidly. Every day we are hearing the newspaper, reading the newspaper, आज ये fraud हुआ, ये cyber crime हुआ, ये attack हुआ, ये ransomware हुआ, या आपके साथ भी कभी कुछ हुआ होगा जहां आपके पैसे अकाउंट में से चले गए और आपको पता भी नहीं चला. और बाद में जब आपको पता चला तो आपको पता चला कि या तो किसी ने आपके एटीएम में से विड्रॉ कर लिया, या आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड, या आपने किसी के साथ ओटीपी या केवाईसी क्रेडेंशियल्स शेयर करी, जिसके कारण वो आपके साथ फ्रॉड हुआ है. सो ऑल दिस कम्स इनटू फाइनेंशियल एंड साइबर क्राइम. And financial crime has become a huge matter of concern for governments and institutions throughout the world, obviously, because people are losing money. It's creating so much of chaos. Everybody wants to prevent it. We have seen what happened with so many organizations. We know what happened at PNB. We know what happened at ILFS. So it's a huge concern because it affects the economy in a very, very big way. And that's the reason it needs to be curtailed. It needs to be monitored. And a lot of government organizations, a lot of regulatory bodies, they are working in close collaboration. So in India, if you see, there is FIU, which is a Financial Intelligence Unit. There's SFIO, there is ED, which is the Enforcement Directorate. In the police, we have something which is called EOW, which is Economic Offence Wing. They all look after financial crime activities, what kind of frauds are happening across the country. So all these are reported to them, they disseminate data, and then the investigations are carried out. For example, when CBI carries out a lot of these investigations. So that's exactly what financial crime is all about. So when I'm talking about financial crime, it not only covers frauds, but it includes many, many more things. And this is everything that we cover under our certification as well. So when we talk about frauds, we talk about what kind of frauds are happening. अगर किसी ने सुना हो कि insider trading क्या होती है, वेयर आपको पता है कि आपकी कंपनी का स्टॉक ऊपर जाने वाला है क्योंकि आप कोई अच्छी न्यूज़ देने वाले हो कि मेरे आज रिजल्ट्स 100% ज़्यादा थे लास्ट क्वार्टर से, तो मैं स्टॉक मार्केट का प्राइस, तो मैंने इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा के 1 दिन या 2 दिन पहले ही शेयर्स खरीद लिए. मैंने वो शेयर्स इसलिए खरीदे ताकि उनके जब प्राइस ऊपर जाएंगे तो मुझे पर्सनल गेन होगा. दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग. अगेन इट्स अ फ्रॉड, इट्स अ वाइट कॉलर क्राइम. When I say anti-money laundering मतलब काले पैसे को सफेद पैसे जैसा दिखाना. Money that I have got through illicit activities which are not permissible, जैसे कि ड्रग डीलिंग, कोकेन बेच के जो भी मैंने पैसा कमाया है वो मैं आपको मेन स्ट्रीम में लाऊंगी. अच्छा, मैं मेन स्ट्रीम में क्यों लाऊंगी? सपोज मुझे आज अपने लिए गाड़ी खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, तो मुझे पैसा तो वाइट पैसा भी चाहिएगा, ब्लैक मनी भी चाहिएगा. इट कुड बी अ कंपोनेंट ऑफ बोथ. ब्लैक मनी तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझे व्हाइट मनी भी चाहिए. उसके लिए मुझे कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करनी पड़ेगी. करप्शन, अगर मैं आपका कुछ काम करने के लिए आपसे ब्राइब ले रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो दैट इज अ करप्ट प्रैक्टिस. या मैंने कुछ भी प्राइजेस मैनिपुलेट करे हैं, मैं स्टॉक ज्यादा पैसों में बेच रही हूँ होर्डिंग करके, दैट इज ऑल्सो करप्शन. इन्वेस्टिगेशंस, जिसने भी जो क्राइम करा है वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? आप जाके कोर्ट में आपको एविडेंस देनी पड़ती है. So how you gather that evidence, how you maintain the chain of custody, how you present it in the court of law. So there are a lot of there are a lot of lawyers who work into investigations along with the legal authorities, with the enforcement authorities in India. But ये इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए. Again, tax evasion और tax avoidance, ये सब दोनों दो अलग चीजें होती है. टैक्स अवॉइडेंस तो हम सब करते हैं क्योंकि हमें देखना है कि कैसे कम से कम टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है, और टैक्स अवॉइडेंस में कोई बुराई नहीं है. आज मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी, आज मैं कोई और चीज करूंगी जिससे मुझे कम टैक्स भरना पड़े, नो प्रॉब्लम. बट टैक्स इवेजन इलीगल हो जाता है
टैक्स एवेजन मतलब कि मैंने अपना पैसा, आपने सुना होगा कि पैसा कैसे लोग स्विट्जरलैंड भेजते हैं, मॉरिशस भेजते हैं, दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं, जहाँ पे किसी को उनके पैसे का पता नहीं चला। अब ये पैसा कहाँ से आया, आपके कौन से बिजनेस में से आया, ये सब आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, इसीलिए आप इंडिया में नहीं रख के ये पैसा दूसरी जगह रख रहे हो। एंड आप पैसा बाहर रख रहे हो, जो आपको पैसा एक्टिविटीज जो इलीगल है उनमें से आया है, उसके ऊपर आप टैक्स तो पे नहीं करोगे, तो टैक्स एवेजन हो जाएगा। अगेन एसेट रिकवरी, आपने इस पैसे से जो काला पैसा है, उससे आपने जो प्रॉपर्टीज खरीदी है, मैं आपसे वो पैसा कैसे रिकवर करूंगी, क्योंकि जिस आदमी को लॉस हुआ या जिसका पैसा आपने लूटा है, वो तो मुझे कुछ ना कुछ उसको किसी ना किसी तरीके से वापस देना पड़ेगा। तो हाउ विल आई रिकवर द असेट्स। जैसे आपने नीरव मोदी का केस सुना होगा, अभी आपने किंगफिशर का केस सुना होगा, तो इसमें जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो बेचकर ही लोगों को या बैंक को पैसा मिलेगा। सो दैट इज असेट रिकवरी. Compliance programs, as I said, compliance is also very, very important in today's time. And there are a lot of, in all these domains that you're seeing on the screen, for all of them, there are multiple functions which are there in the industry for which you can be a part of. And there is a huge career opportunity because this is a growing industry, fastest growing industry. So जहाँ लोग दो तीन लोग रखते थे हर फंक्शन के लिए, अब लोग कम से कम उसका डबल ट्रिपल रख रहे हैं, because they have to tighten their monitoring skills. They have seen what are the implications of not being compliant or not having good fraud monitoring systems. नहीं होते तो they have seen the repercussions of it. अगर मुझे 1,000 रुपए ज़्यादा खर्च करने हैं, वो बेटर है कि मैं आज वो चीज़ खर्च करूँ, नहीं तो कल से जो मुझे पेनल्टी लगेगी वो तो लाखों और करोड़ों में लगेगी। तो इसीलिए people are ready to employ staff, be well staffed in every function of financial crime, so that tomorrow they don't have to pay huge fines. अगेन साइबर सिक्योरिटी भी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मेरा सिस्टम हैक हो गया, मेरा डेटा लीक हो गया, या किसी ने मेरा नेट बैंकिंग का अकाउंट खोल लिया, तो आपको पता है किस तरीके के लॉस हो सकता है। आज मेरे पास जो डेटा इज माई प्राइम असेट, वो डेटा मैंने किसी और ने मेरा ले लिया, वो कैसे यूज कर रहा है, उसको कैसे सेल कर रहा है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि दिस इज हाउ फ्रॉड हैपेंस, दैट इज हाउ यू यूज दैट डेटा टू कमिट फ्रॉड। आज मुझे अगर आपकी सब credentials पता है, तो मैं वो credentials को misuse कर सकती हूँ to commit fraud. So having knowledge of all these domains is extremely important. And in terms of professional growth, there are huge opportunities. So this is an organization which is based in US, and they provide a lot of material, certification and training programs which helps you to understand what is financial crime, how to prevent it, how to detect it, how to investigate, and how to do enforcement. And for this, we offer a certification program. And certification program में हम आपको हर चीज़, हर टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइम समझाते हैं। आपको समझाते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस आपको देखने चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक में काम कर रही हूँ, आज आपने आके मेरे साथ एक बैंक अकाउंट खोला है, तो आप कौन हो, आपका पैसा ये कहाँ से आया है, आपकी सैलरी मिल रही है या ये सैलरी किस जगह कहीं और से आया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट इनकम। आई नीड टू नो ऑल ऑफ दिस, because tomorrow when you do a transaction, or tomorrow when you're depositing money into the account, I should know that this money is legit. It's not come through illegitimate resources, because once it comes through illegitimate resources, there will be an act of anti-money laundering, there'll be an act of tax evasion, and it could be through corrupt practices or through illegal activities such as human trafficking, wildlife trafficking, and so many others. So this is an organization which is completely focused on it. It's got the best resources that it's providing you, very practical oriented, very relevant, with lot of scenarios. आज अगर मैं आपको कोई भी चीज़ सिनेरियोज के मतलब अभी भी जैसे मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मैं आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ तो आप वो सिनेरियो समझ पा रहे हो कि इसमें क्या हुआ था। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो कि ये हुआ, वो हुआ, ये कैसे हुआ, किसने करा, कैसे उन लोगों ने जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस थे वो कैसे ब्रीच करे, कैसे मैनिपुलेट करे, ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए, तो ताकि अगली बार ये गलती फिर से ना हो, कहीं और दुनिया में भी नहीं हो। ये लोग ने काफ़ी सारी केस स्टडीज, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें कंपाइल करी है मॉड्यूल के अंदर, जिससे यू बिकम मोर विजिलेंट एंड योर थिंकिंग प्रोसेस इज ट्रिगर्ड। सी नोबडी कैन टीच यू, the fraudsters are always ahead of us. Nobody can teach you financial crime. What I can teach you is how to be ahead and how to think ahead. So how to be forward thinking. एंड व्हेन यू गेट सर्टिफाइड, क्या होता है कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लो या आप कितनी भी रीडिंग कर लो, पर वो सर्टिफिकेशन जब तक आप नहीं करते हो, आपकी नॉलेज वैलिडेट नहीं होती है। यू डू नॉट नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू डोंट नो। सपोज आपने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर ली, तो आपको पता नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन में आप कोर्ट में कैसे आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को दोगे ताकि वो प्रेजेंट कर सके।
आपके पास आज डेटा है, you have abundance of data. You don't know which data to look at, which data to ignore. So you don't know how to filter data. And then you don't know how this data is going to be used for you to detect any kind of financial crime. For example, अगर मैंने आज एक डेटा कलेक्ट करा कि आज मेरे पास ये 1000 कस्टमर्स हैं जिनकी सैलरी लेस देन 2 लाख है। अगर कल से ये कोई ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें ये लोग 3 लाख या 5 लाख एक साल में ट्रांसफर कर रहे हैं, इनकी सैलरी 2 लाख है लेकिन ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, तो मैं पूछूंगी तो सही ना कि भाई बॉस आपकी सैलरी 2 लाख थी, मतलब अपने खुद से पूछूंगी कि ये लोगों की सैलरी 2 लाख थी, ये लोग 5 लाख रुपए कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं हर साल, पैसा कहाँ से आ रहा है? आदमी 2 लाख रुपए में तो अपने बेसिक नीड्स ही मीट करता है, 5 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा हुआ? तो हैज ही इनहेरिटेड अ प्रॉपर्टी भाई उसके, और हैज ही doing some other side businesses, or then has he getting some illegal money which he has put into the banking system? तो ये सब चीजों से मेरा इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। एंड for you to establish yourself as a professional who has subject matter expertise in financial crime, the certification very much helps you to get employed and to get good job opportunities in this domain. So having the right kind of certification makes you go into the depth of the topic, and it helps you to become an asset to the company and get a good job. So you need to be a professional of tomorrow. आज जो ट्रेडिशनल लाइन्स ऑफ बिजनेस थी या जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस थे वो ऑलरेडी बहुत क्राउडेड हो चुके हैं, बहुत सारे लोग वही सब चीजें कर रहे हैं। आज अगर आपको कुछ नया करना है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ मच मोर है। इसीलिए बी फॉरवर्ड थिंकिंग एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर अराउंड यू। काफी लोग इसीलिए ये चीजें नहीं करते क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं होती है। अगर आपको नॉलेज होगी, आप एक बार इसके बारे में पढ़ने लगोगे तो आपको नॉलेज होगी एंड यू विल फील लाइक डूइंग इट। ऑल द टॉप कंपनीज, मल्टीनेशनल्स, बैंक ऑफ अमेरिका देख लो आप, all the big four, EY, PwC, KPMG, all of them have very, very big teams who are working into financial crime consultancy. So as I just mentioned to you, that why we say that you should do the CFCS certification. So when you do ACFCS, जो मेरी organization है, Association of Certified Financial Crime Specialists, which I mentioned is a global organization, जब आप उनके साथ ही certification करते हो, you get a credential which is called CFCS, Certified Financial Crime Specialist. I'm also a certified financial specialist. So I write my name as Pallavi Ajmera, CA, because I'm a chartered accountant, and also then CFCS. तो आपकी लिंक्डइन पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया आदमी प्रोफाइल देखता है, जो लोग इस डोमेन में से हैं उनको समझ आ जाता है that you are certified by this organization and you have an international credential that you're holding. So this credential, the depth and the breadth is very good. एक ही सर्टिफिकेशन में आपको बहुत कुछ आप सीख जाते हो, आप समझ जाते हो कि क्या चैनल्स है, क्या रेड फ्लैग्स है, क्या मेथोडोलॉजीज यूज करी जा रही है टू लॉन्डर मनी, टू डू फ्रॉड्स, टू डू इन्वेस्टिगेशन। आपको बहुत हॉलिस्टिक नॉलेज आ जाती है। एक बार आपको ये हॉलिस्टिक नॉलेज समझ आ जाती है, you can then pursue a good career in it. There are a lot of opportunities in the market, and I will also be I and Anurag ji will also be happy कि कभी किसी को कुछ career guidance चाहिए या कोई opportunity चाहिए, क्योंकि we are interacting with lot of corporates who have huge requirements in this domain. तो हम लोग आपको placement भी करवा सकते हैं। If you are a certified professional, then वो placement बहुत आसान हो जाता है। So yes, as I mentioned, that this is the credential that you get, Certified Financial Crime Specialist. It is a mark of your financial crime knowledge and skill sets. अभी जिस तरीके से मैं आपको बताई थी that what is financial crime, तो इसमें क्या किस तरीके के रोल्स होते हैं, जैसे कि आपको KYC डिपार्टमेंट में या कस्टमर ड्यू डिलिजेंस डिपार्टमेंट में आपको रोल मिला, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी कि उसका प्रोफाइल क्या है, क्या करता है, कौन सी कंट्री में है, कौन सी सिटी में है। फिर आपको उसके ट्रांजैक्शंस एनालाइज करने पड़ेंगे कि क्या टर्नओवर है या क्या उसकी सैलरी है, क्या किस तरीके से उसका लाइफस्टाइल है, 10,000 रुपये विड्रॉ करता है, 20,000 रुपये विड्रॉ करता है, या उस जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा विड्रॉ करता है। तो दिस इज द वे, वो कौन सी कंट्री में से है, इज ही फ्रॉम इंडिया और इज ही फ्रॉम अ टैक्स हेवन? There are so many tax havens, we all know. All the politicians have parked their money in tax havens. तो बस अगर वो इस geography में से है, which is allowing you not to disclose your income or your personal credentials, you have a scope of parking the illegal money in those jurisdictions. So what is your influence? What is your political influence? जैसे अपन कहते हैं ना कि MLA है तो भाई इसका लाइफस्टाइल इस फ्लैम्बॉयंट ही है, ये कहीं और से पैसा बना रहा है, गवर्नमेंट तो उसकी इतनी सैलरी नहीं दे रही है, so where is he parked the money? What are the transactions that he's doing? So we assign you a score, a risk score. So ये सब आपको ये काम करने पड़ेंगे कंपनी में, very interesting.
जो कस्टमर आपको देता है यू डोंट टेक दैट एट फेस वैल्यू। बॉस मैंने कहा कि मैं ये करती हूँ, आप इन्वेस्टिगेट करो ना, आप कैसे इन्वेस्टिगेट करो कि आप मुझसे और क्वेश्चंस पूछो, मेरे बारे में और डेटा कलेक्ट करो, आप मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल देखो, आप मेरा फ्लो पैटर्न देखो अकाउंट में, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेंगी। आपको समझ आएगा कि जो पल्लवी ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन थी वो कितनी सही है और कितनी गलत है। अगेन so these are the various activities that you'll do, when you're managing a relationship. You will say कि इसका रिस्क कम है, ये नॉर्मल कोर्स में हर चीज़ नॉर्मल कर रहा है, there is no mismatch in his profile and his way of working. So you will say, okay, this is a low risk person. You will say this is, if he's a politician, you will say he's a high risk person. If he's a government official, again, you might want to say that he's a high risk professional because there's a huge scope for him to do anything, to adopt corrupt practices or to have a culture of accepting bribe. So you might classify him depending upon what his profession or what his standing in the community is. Again, when I'm doing the same thing exercise for a company, I'll do a fraud risk assessment कि भाई ये कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, इसके क्या कस्टमर्स है, क्या प्रोडक्ट्स है, जो ये प्रोडक्ट कह रहा है ये बेच रहा है, ये वही प्रोडक्ट बेच रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ और बेच रहा है जो वो हमें नहीं बता रहा. What are his channels for distribution? Because all this leads to financial crime. So for you to understand कौन सी कंपनी से कौन सी आदमी से आप डील कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो कंपनी को कौन चला रहा है. बिकॉज आपको अगर पता हो कि जो सितंबर 11 में अटैक्स हुए थे यूएस में, जहाँ पे ट्विन टावर्स वो ब्लोन अप, जो वो अटैक्स हुए थे, जो उसमें पैसा आया था टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, वो कहाँ से आया पैसा? आज टेररिस्ट को भी तो पैसा चाहिए, तो कौन उनको वो पैसा दे रहा है, क्यों वो पैसा कंपनी दे रही है, या वो इंडिविजुअल क्यों दे रहा है उसको पैसा? दिस इज ऑल बिकॉज द मनी हैज गॉट लॉन्डर्ड. अगर पैसा नहीं जाता उनके पास तो वो इतना बड़ा एक्टिविटी कैसे कर सकते थे? So that is why after that September 11, actually happened, that is when people started seeing that this illegal money is doing a lot of further damage that they never thought of to the economy, not only to the economy, but it is going into terrorist financing. It needs to be stopped and monitored. पहले भी लोगों को पता था ये हो रहा है, लेकिन हम कह रहे थे ना इतने सालों से हवाला हो रहा है तो हो रहा है, इट इज अ पैरेलल सिस्टम व्हिच इज वर्किंग. बट अब जब हवाला का पैसा टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी चीजों में जा रहा है, तो इट इज समथिंग व्हिच इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर एवरीबॉडी. सो यू बीइंग इन एनी प्रोफेशनल टुडे, you have to be vigilant to understand when there's money involved. What is this color of the money? Is it black money? Is it white money? What is it? Is it tainted? You have to know it. There is no excuse for being unaware. As I mentioned, you have to understand who is the beneficial ownership. Am I funding? Suppose आज एक charitable organization बन गई है, आप charity में पैसा दे रहे हो. Charity तो सिर्फ उसका नाम होगा, वो कुछ और धंधा कर रहा होगा जो आपको नहीं पता है. बस पता करो क्या करता है वो. The face of it is different. What he does is completely different. So you have to know whom you're indulging with. So these are the kind of activities you do. Again, there's a very important term in financial crime which is called trade-based money laundering. आज मैं ट्रेड कर रही हूँ, आज मैं आपको कुछ शिप कर रही हूँ कुछ. अभी थोड़े दिन पहले ही एक केस था जहाँ पे एप्पल के साथ कोकेन इंपोर्ट हो गई थी. कोकेन वाज यूज्ड बिटवीन द एप्पल्स टू फिल इन द गैप्स. कोकेन के पैकेट्स रखे हुए थे. It made you feel that it was just, as a partition for the apples to be kept properly. But it was actually cocaine when they came to know. So what is getting traded? What is the value of the transaction that is getting traded? Because by trading, क्या होता है, आज अगर मुझे किसी को 1,000 रुपए देने हो तो मैं कहूँगा मैं उसे 100 रुपए का माल भेज रहा हूँ. आप तो नहीं देखेंगे कि मैंने उसे 1,000 रुपए का माल भेजा है, 100 रुपए का माल. आप तो शिपिंग कंपनी हो. मेरा पैसा, मैंने उससे 1,000 रुपए में मुझे इंडिया मंगवाने थे, मैंने 100 रुपए का सामान बेच के उसको 1,000 रुपए मंगवा लिया. क्यों? क्योंकि मुझे सब अथॉरिटीज को फूल करना था. So this is how I'm making a lot of illegal money in the country. So there are various such things, we are seeing this with, there's a vague description of goods, consisted, the value is overpriced, underpriced, depending upon how you're trying to make the money, who's transferring money to whom. Again, what is being shipped is incorrectly disclosed. So there are a lot of methods that are used. So when you are working, you as a professional can work into this. इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट होता है हर जगह, which works only for trade-based money laundering. तो जो एक्सपोर्ट इनकम जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देखते हैं ना, जो जैसे बैंक में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देख रहे हैं, वो सब कस्टम क्लियरेंस के पेपर्स मैच करना, आपके सब एक्सपोर्ट के पेपर्स मैच करना, उससे आपको पता चल जाता है if any such activities happening. So this is such, and like this, there are many other things. Something which is called sanctions also.
something which is called, asset recovery department in every bank. So you can either work in the fraud monitoring department, in the trade-based money department, in the anti-money laundering department, investigations department of any organization, bank, asset recovery department, sanctions department. Sanctions is also something which is very important. There's another term which you all will not be familiar with. You all can also work in the crypto department. Now, a lot of crypto investigations have started, and I'm sure all of y'all would be aware with what is cryptocurrency. पर अभी क्रिप्टो करेंसी में भी जो पैसा आ रहा है, जो पैसा बन रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, सही तरीके से आ रहा है, गलत तरीके से आ रहा है, इसका भी एक पूरा चैलेंज है फाइनेंशियल सिस्टम में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी मैनिपुलेटेड by fraudsters. So a lot of innocent people will lose money into this game. So you can be a profession who specializes into crypto frauds also. And we have a certification for that, a special certification for crypto frauds, which we have recently joined, which we recently launched. So you can seek further details. Anurag ji has all the details about both these certifications, certification in financial crime and also certification in crypto frauds and investigations. Both of them have a lot of job opportunities which are upcoming. So please, if anybody is looking for a career in this, please get in touch with me or Anurag ji. We'll be happy to assist. So as I mentioned, that Association of Financial Crime, it helps you to meet your professional and personal objectives. So we provide you a certification which gives you the crypto specialization or the certification in financial crime. Then this is a domain in which you need continuous training. एक बार आपने certification कर लिया, it is not enough. Because why? Because so many things around you are evolving. Like technology is evolving in a very, very big way. आज आपने देखा ही होगा that nothing is done. Like आज कोई check forge नहीं करेगा. आज कोई आपके साथ आपके अकाउंट में घुस के आपका पैसा सीधा ट्रांसफर कर लेगा. And within a fraction of seconds, your money would have gone anywhere in this world. So you have to be very vigilant. You all have heard about artificial intelligence, machine learning. All these things are being used to make patterns for financial crime, to investigate and detect financial crimes. So it's very important for you to understand how technology is evolving and how financial crime domain is evolving, because both of them are very interconnected. So it needs to be a continuous process. And for this continuous process, we provide you a lot of training programs, lot of webinars, events on the ACFCS portal, which helps you to stay abreast. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू मेंबरशिप. हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज क्या न्यू रूल्स और रेगुलेशंस हैं, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट द लॉयर्स आर एनफोर्सिंग सो दैट टू प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड्स, व्हाट आर द वेरियस कंप्लायंसेस दैट आर हैपनिंग, आपको क्या रिपोर्ट करना पड़ता है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एंड सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी प्रोफेशन टुडे इज बिकम नेटवर्किंग. The more you network, the more you grow in any domain, in any professional domain. Once you have entered the space, आप चाहे तो आप जूनियर लेवल पे आप एंट्री करेंगे, आपका पैकेज 20-25-30 हज़ार रुपये होएगा या 40-50 हज़ार रुपये होएगा. उसके बाद through your credibility, your work, and also networking, you can definitely keep growing. You can get connected to the financial crime community all in internationally also, across India borders and in India also. That will help you to grow in your career. You can seek opportunities abroad, because फाइनेंशियल क्राइम का कलर क्या है, इट इज द सेम अक्रॉस जुरिसडिक्शंस. फ्रॉड्स जिस तरीके के हो रहा है, ये नहीं कह सकती कि ये फ्रॉड इंडिया में हो रहा है और ये यूएस में नहीं हो रहा है या यूके में नहीं हो रहा है. फ्रॉड और ये जो डोमेन की नॉलेज है, दिस इज हेल्पफुल क्रॉस jurisdictions. The regulatory regime might differ, but underlying intention of the regulators across all the jurisdictions is the same. So if you're acquainted with Indian laws, it will be very easy for you to understand the laws and regulations in any other country also. So we are anyway providing you a global certification. The global certification is giving you a lot of global knowledge. We are not giving you knowledge of any specific jurisdiction. You can work anywhere in the world if you have this certification with you. You can work in India, you can work abroad. And through your networking, through your skill sets, your aptitude, your what kind of skills you develop across this domain, you can grow to any level. So we try, and since this is something which is covering so many topics, again, you have employability across so many functions in financial crime. It's not just one. There's some बहुत सारे departments हैं. You can go and work in any department you want. And this, as I just mentioned, it is recognized globally in India. Like the CFCS certification is also being sponsored by RBI. RBI is giving this
फॉर देयर ओन इंटरनल ट्रेनिंग वो अपने ऑफिसर्स को ये सर्टिफिकेशन का कॉस्ट रिएम्बर्स करते हैं। ऐसे ही दुनिया भर में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो अपनी खुद के लोगों को भी ट्रेन करती है, बिकॉज ये ऑफिसर्स ने भी कभी भी दे आर ऑल्सो नॉट सो टेक savvy, दे ऑल्सो डोंट हैव सच अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट फाइनेंशियल क्राइम। सब नए हैं इस चीज के लिए, सबने देखा है क्राइम कैसे होता है, लेकिन पहले क्राइम पेपर पे होता था। किसी का आपने कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर दिया, चेक फॉर्ज कर दिया, आपने किसी के पैसे लेकर आप भाग गए। आजकल इस तरीके के फ्रॉड नहीं होते, आजकल ये बहुत हाई लेवल के फ्रॉड होते हैं। तो पीपल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। एवरीबॉडी लाइक सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई है, वो कहते हैं कि अपने सब कंप्लायंस ऑफिसर्स को, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर्स को सबने मैंडेटरी कर दिया कि भाई ये सर्टिफिकेशंस करो, इससे आपकी नॉलेज ग्रो होगी और पर्सपेक्टिव विल ग्रो। So it's important. Again, all the big four, all of them are making their professionals through these certifications. So for you also, there is a lot of scope. In India, also we have like more than almost now more than 500 to 600 people who are holding this credential. So we have been working with ACFCS only for the last 4.5 years, but the community is growing multifold and across other, and there are other people who are doing other domestic certifications also. But domestic certifications में आपको इसलिए recommend नहीं करूँगी क्योंकि डोमेस्टिक सर्टिफिकेशंस में एक तो क्या हो रहा है, आपकी नॉलेज बहुत कम है, वो लोग के डेप्थ और ब्रेथ बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो लोग इतनी फटाफट अपना पोर्शन रिवाइज नहीं करते, इट बिकम्स आउटडेटेड बिकॉज अ लॉट ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग फिजिकल बुक्स फॉर स्टडी। इसमें फिजिकली आप ये चीज पढ़ ही नहीं सकते, आपको वर्चुअल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन यू आर स्टडीइंग इट वर्चुअली द कंटेंट कैन कीप इवॉल्विंग एज टेक्नोलॉजी और एज द एंटायर सिनेरियो इवॉल्विंग। तो हमारा जो कंटेंट है वो सब आपको ACFCS के पोर्टल में पड़ जाएगा। वंस यू हैव डन द पेमेंट एंड यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ, you have free access to the portal. On the portal you will see that there's a CFCS certification का भी पूरी पढ़ाई है, उसमें आपको खुद ही रीड करना है, आप वीडियोस अटेंड कर लो, आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा। इवन इफ यू हैव नो बैकग्राउंड नॉलेज, क्योंकि जैसे मैंने आपको इतने सारे सिनेरियो समझा, ये सब सिनेरियोस आप समझ ही रहे हो ना, इसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि अरे मैंने ये चीज सोची नहीं थी कि ऐसा भी कर सकता था, या मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता था। मुझे तो ये आदमी इतना पसंद था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये CFO होकर भी इस तरीके के काम कर सकता था। जैसे अपन ने सत्यम में देखे ना, सत्यम का केस जो था उसमें 1000 लोग थे जो गोस्ट एम्प्लॉयज थे, मतलब वो थे ही नहीं, पेरोल पे थे, उनको सैलरी जा रही थी, लेकिन वो एक्चुअल वास्तव में तो वो कोई आदमी था ही नहीं, वास्तव में वो पैसा किसी और के पास ही जा रहा था, एम्प्लॉय को नहीं जा रहा था, वो एम्प्लॉयज थे ही नहीं कंपनी में। So there are a lot of such things that you do, to make money, to hide your losses. You do a lot of activities. To siphon off money, you do a lot of such activities. So all of them are driven sometimes with an intention to save yourself, sometimes with an intention because your greed has grown so much. जो भी तरीके से है. So we are providing you webinars, and all these are complimentary. Once you are registered with us, then you'll keep getting our newsletters, articles, white papers, so many things which you can do at your own pace. देन इंडिया में इसका एग्जाम होता है, 4 घंटे का एग्जाम है। आप अपना एग्जाम अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से शेड्यूल करके सेंटर पे चले जाइए, या आप घर से भी ले सकते हो ऑनलाइन। इसमें कॉपी करने का तो कुछ स्कोप ही नहीं है, इससे सिनेरियो बेस्ड एग्जाम। आपको सिनेरियो दिया है, आपको समझना है सिनेरियो में क्या हो रहा है और आपको वो आंसर सेलेक्ट करना है। तो आप इसका एग्जाम कहीं पे भी दे सकते हो दुनिया में बैठ के। हमारे पास पूरे दुनिया में इसके बहुत सारे सेंटर्स है, आप सेंटर पे जाके दे सकते हो, नहीं तो आप घर से भी दे सकते हो। 4 घंटे का सिंगल एग्जाम है, आप खुद से पढ़ाई करो। पढ़ाई ऐसी है जो आपको समझ आ जाएगी, उसको पढ़ाई करने के लिए आपको सब मटेरियल जो भी आपको चाहिए सब पोर्टल पर है। आपको कोई और साइट पे या कहीं और नई ट्यूशन, नई क्लासेस, किसी भी चीज जाने की जरूरत नहीं है। आपको 100% सबको समझ आएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करा गया है वो सबके समझ में आ जाता है। और हम सब इंडियंस हैं, हमें सबको पता है कि हेरा फेरी कैसे होती है। आज हम हेरा फेरी के बिना नहीं चलते। तो जब हमें समझना होता है कि क्या हेरा फेरी हुई है, वो हम सब समझ पाते हैं कि यहाँ से इसको पैसा मिला होगा, इसने ये पैसा यहाँ टिका दिया है, इसने वो पैसा ये दिखाने के लिए इसमें अकाउंट में इसने ये एंट्री मारती है, ये सब हम समझ जाएंगे। उसके लिए आपको अकाउंटेंट होना या आपको CA होना या कोई भी प्रोफेशन में आपको कुछ होना वो जरूरी नहीं है। All you have to do is you have to be an alert person, you have to be an vigilant person, and you have to be a hardworking person to understand this better. So this is how the CFCS certification has been constructed. We have analyzed a lot of jobs, job tasks. There's a worldwide survey that has been done to understand what scenarios are happening, किस तरीके के क्राइम हुए हैं दुनिया में, कहाँ हुए हैं, किस टेक्निक से हुए हैं। तो वो टेक्निक्स वगैरह सब हम आपको बताते हैं मटेरियल में, ताकि आप समझ सके।
कल से अगर आपको समझ आएगा कि ये चीज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो आप उसको फ्लैग कर सकते हैं फटाफट. As I mentioned to you that all the preparation aids are on the ECFCS portal. You have an ebook which you can download. We have an audiobook which is mobile compatible. You can listen to the audiobook multiple times. Accent is very easy to understand, though it is a US accent, but they have spoken very well and very slowly. You can understand 100% of it. Of course, it's all in English. Then there are also 11 hours of recorded webinars, which have got interviews of subject matter experts. There are live sessions also, which are conducted periodically. So you can attend the live sessions also if you want to help the live sessions to prepare. And then you have to submit your application form. And you can then schedule the exam at your own convenience. Mock test bhi hai portal pe. There's a mock test of more than 100 questions. You can appear for the mock test first. It will give you an complete direction about what kind of questions you're going to face in the exam. Coming to the exam, it's completely an MCQ format, multiple choice questions. There are scenarios that are given to you. The passing, there's no negative marking. The passing percentage is 68%. I've rounded off to 70% in this presentation. So passing is not so much of a worry. It's objective completely. It is going to test your understanding more than anything else. Yes, the results are given immediately. If you do not clear in the first attempt, you can give multiple attempts. The retake is after 60 days. For the retake, you will have to pay an additional amount. But otherwise, the first time the certification and the exam cost is all included in the pricing. And coming to the pricing, I will come to the pricing. The pricing is which includes 1 year of membership. 1 year of membership ke saath it comes to $745 US. So if I have to convert 745 in today's time, because today the dollar is I think approximately 82 rupees. So if I have to convert that, I would say that it comes to around 61,000 rupees, and $970 would come to around 82,000 rupees. So 3 years of membership. The membership is important because you have to have continuing credit points to recertify every 3 years. So we generally prefer that people go for the 3 years package. उसमें आपको certification plus 3 years of membership complimentary मिल जाती है. So for 3 years you can keep receiving all the newsletters, attending all the webinars, and understanding, have a complete understanding, and stay tuned and abreast about financial crime domain. These are the various topics which the certification covers. So again, these are the various jobs and the various functions in which you can seek job opportunities. Again, as I mentioned, these are what are the resources that are prepared. आज अगर आपने आज register करा है, within 1 year you have to take the exam, anytime during 1 year. It's completely at your convenience. For preparation, I would say around 70 to 80 hours for students. 70 to 80 hours of studies will help you to prepare for this exam. This is the crypto certification which we have recently launched. If anybody is looking to specialize in crypto, it's again a very big domain, very upcoming domain. You can do the ACFCS crypto certification. Again, this is more focused around financial crime. So it is making you understand what is a blockchain technology, what is the intersection of financial crime with this technology, and how the compliance professionals need to understand how money is flowing from the legal system, from the finance system to the crypto world, and how it is flowing back. So we have developed this with chain analysis, and it covers a lot of use case studies of cryptocurrency. What are the developments? What is the transaction monitoring? What is the legal framework? What are the recommendations by the regulators in this and the associations, regulatory bodies in this domain? How to keep a watch? What are the what are the risks associated in doing a investment in crypto? We also talk about all that. So even from a personal perspective, it is definitely useful to you. Let me give you a case of financial crime since I've explained to you. There was a book which was being sold on Amazon. Amazon पे ये बुक जो बिक रही थी, ये $555 के लिए बिक रही थी. किसी ने नहीं पूछा कि बुक के अंदर, मतलब ये बुक के अंदर कुछ टेक्स्ट ही नहीं था, या मैं ये कहूँगी जो टेक्स्ट था गूगल में से कॉपी करके डाल दिया था. ये बुक मैं और आप नहीं बाय करते. ये जो बुक बाय कर रहे थे, दिस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल who was trying to transfer money from एक आदमी को, जैसे मुझे पैसा देना हो, मुझे $1 million उसको देने हो. आज मैं $1 million उसको बैंक से दूंगी तो बैंक उसको क्वेश्चन करेगा, तुझे ये पैसा पल्लवी ने क्यों दिया, किस लिए दिया.
उसको ये सब क्वेश्चनिंग नहीं चाहिए थी, उसने अपनी अमेज़न पे एक किताब बना के डाल दी। अभी जितने भी लोगों को उसको पैसा देना था, मैंने पल्लवी को देने थे उसको 5-50,000, तो मैंने 10 बुक उसको बाय कर ली। उसके पास पैसा पहुँच गया, कोई क्वेश्चन किसी ने क्वेश्चन भी नहीं करा। अरे बुक बेची है, क्यों कोई क्वेश्चन करेगा? दिस इज़ हाउ दीज़ आर द टेक्निक्स दैट यू यूज़ फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। मेरा पैसा उसके पास चला गया, किसी ने पूछा भी नहीं और किसी ने देखा भी नहीं। उसका काम हो गया, मेरा काम हो गया। सिंपल एज़ दैट। अगेन इंश्योरेंस में भी आपने सुना होगा कितने सारे फॉल्स क्लेम्स होते हैं, कैसे-कैसे पैसा लोग कोई और मरता है और कोई और क्लेम कर लेता है कि भाई बॉस मैं ये पैसा मुझे मिल जाएगा इसका, जो इंश्योरेंस का पैसा है, बट बड़े-बड़े फ्रॉड होते हैं। आप चोर नहीं हो, आप यू आर नॉट अ किलर, यू आर नॉट गोइंग टू मर्डर समबडी फॉर मनी, बट व्हाट यू विल टेक इफ समबडी इज डाइड, यू विल मैनिपुलेट दिस पॉलिसी सो दैट you can take the benefit of his insurance claim. So a lot of such thing that happens. So this is typically how the case studies will look like. There'll be a case study which will give you what are the facts about the customer, what happened in this case, and then they will give you options. ऑप्शन में आपको बोलना है कि ए बी सी या डी कौन सा सही है। आपको केस समझना है कि केस स्टडी में क्या हो रहा है और फिर आपको ऑप्शन देना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगर आपने कंटेंट ठीक से पढ़ लिया है, समझ लिया है, आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कोई भी आपत्ति नहीं हुई, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। और इंडिया में हमने रीजनल चैप्टर्स भी फॉर्म कर रहे हैं। रीजनल चैप्टर्स में हम लोगों ने मतलब हम लोगों से डोमेस्टिक लेवल पे भी कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग अपने इवेंट्स रखते रहते हैं। वहाँ पे हम लोग आरबीआई वालों को बुलाते हैं बात करने के लिए, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं बात करने के लिए, लीडिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम बैंक्स उनको बुलाते हैं। वहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो, आप खुद समझ सकते हो कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो नॉट जस्ट ग्लोबली बट इवन एट अ रीजनल लेवल यू कैन कनेक्ट विद लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड यू कैन इंक्रीज योर डोमेन नॉलेज। what are the regulations in India, आप सब समझ पाते हो उससे। We have a huge community globally, auditors है, forensic accountants है, people who are working as lawyers, as attorneys, as compliance officers, working into corruption, bribery, मतलब बहुत सारे लोग ये सर्टिफिकेशन करते हैं। टैक्स ये अपना people who are developing softwares, again very big team of people who are doing this because lot of softwares are getting developed to transaction monitoring, fraud monitoring. So people have to possess the knowledge. अगर मुझे आज कोई system बनाना है, तो I have to see what alert the system has to throw when the system has to throw an alert. There are multiple transactions which happen in a day. Every day you cannot see all the transactions. So that's the reason I'm saying that the community is large. People across various domains, across various industries are doing the CFCS certification. Do consider it for yourself. It will be very useful if you can, and it will give you a lot of career opportunities. Well, I've been the only person speaking so far, so I will stop sharing my screen and possibly ask Anurag ji to also share his perspective. For a lot of people, let me also tell you that Anurag ji is also a very seasoned veteran in financial crime and compliance. उन्होंने बहुत साल इस फील्ड में काम करा है और वो भी ये CFCS सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, हमारे साथ काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड है। इसीलिए इन्होंने खुद अपनी एक्सपीरियंस से सोचा कि जब मुझे पता है कि इस फील्ड में कितनी ग्रोथ है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट दूँ। और थैंक यू अनुराग जी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सबको इसके बारे में बता सकूँ। Okay, thanks, Pallavi ji, for such an interesting session. And basically, it's a very career-oriented session. So I'll just request if any one of you have any questions, so you can just maybe raise your hand. A few of you have raised your hand, and you can unmute it. Or if you are not comfortable talking, you can just mention in the chat में आप अपना question डाल सकते हो. So any one of you who have joined in. Most of your questions will be coming in the comments once the video gets uploaded. लेकिन still people who have joined in, if any one of you have any query, question, जो भी अभी मैडम ने आपको बताया इतना सारा about your career options, career pathways, anything you want to ask, anybody? You have to unmute yourself. Lakshay, you can unmute yourself and you can ask. I can see in the chat, लेकिन आप unmute करके पूछना चाहो पूछ लो. अच्छा, okay, you are in a library. Okay. So what was your question? स्कोप इसका इंडिया में बहुत है, फ्यूचर्स का इंडिया में बहुत है, मतलब इंडिया में भी इसके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है। ओनली थिंग इज दैट ये जब ग्लोबली ये लोग कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेशन से ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, तो इसका जो कंटेंट है वो ज़्यादा अपडेटेड है, ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ज़्यादा रेलेवेंट है। आपको
सिर्फ इंडिया की केस स्टडीज नहीं, पूरी दुनिया की केस स्टडीज बता रहा है। जो तो इसका स्कोप ऐसा है कि इट इज मतलब हर हर जगह ये यूज में है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि फ्रॉड तो हर जगह हो रहा है, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज इसकी हर जगह है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडिया से हो तो आप दुबई में काम नहीं कर सकते, यूएई में काम नहीं कर सकते हो। आप कहीं पे भी ये नॉलेज लेकर आप काम कर सकते हो। इंडिया में तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज मैंने आपको बोला कि आज 13-12 हजार लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी जेनपैक देख लोगे आप, WNS, कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनमें कम से कम 3-4 हजार लोगों की टीम सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम में काम कर रही है। तो दे आर हेविली रिक्रूटिंग। Okay. यू शुड फॉर गेटिंग अ जॉब। एक्स्ट्रा स्किल्स इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने एक बार सर्टिफिकेशन कर लिया तो आप इस करियर में आप लग जाइए। आप किसी भी कंपनी को, किसी बैंक को, किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए उनके फाइनेंशियल क्राइम डोमेन में। जो भी फंक्शन में उनके पास होएगा या जो भी फंक्शन में आपके पास इंटरेस्ट रहेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑन द जॉब इटसेल्फ आप बहुत सारे स्किल सेट्स डेवलप कर लेंगे। आपको नॉलेज होगी तो आप बहुत सारी चीजें आप खुद जॉब ऑन द जॉब सीख लेंगे। जैसे आपको जॉब में सीखना पड़ेगा कि ये क्या सिस्टम्स यूज कर रही है बैंक, क्या इसके सॉफ्टवेयर है मॉनिटरिंग के लिए, क्या इसके प्रोसीजर्स हैं क्लाइंट प्रोफाइलिंग के लिए, वो आप सब सीख के फिर आप उसी में ग्रो कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ इट इज अ मिक्स। Yes, CFE you have heard of. The CFE is very similar to ACFCS. Thank you for asking me this question. CFE is very similar to ACFCS. CFE का जो फोकस है वो सिर्फ फ्रॉड्स और इन्वेस्टिगेशंस पे है, क्योंकि CFE काफी ओल्ड कोर्स है। एंड ये CFCS है, ये 12-13 साल हुए हैं इसको कंपनी को एस्टैब्लिश हुए हुए, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसका जो कंटेंट है, इसका डेप्थ और ब्रेथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है। और सिर्फ फ्रॉड्स और इन्वेस्टिगेशंस नहीं कवर करता है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी कवर करता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्रिप्टो फ्रॉड्स, डार्क वेब, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सैंक्शंस। तो ये सब डोमेन CFE में कवर्ड नहीं है, डेप्थ में कवर्ड नहीं है rather। तो ये सब मतलब सिर्फ आपको अगर आप CFE ज्यादा आपको सिखाता है बैलेंस शीट फ्रॉड्स कैसे डिटेक्ट करो, इस तरीके के फ्रॉड्स, what surfaces on the paper, but we know that everything does not surface on paper. You have to have a 360-degree and holistic perspective, which ACFCS provides you. Okay, thank you, madam. Yeah. Okay. Yes, it will help you when you're doing a master degree in forensic accounting, definitely. Anyone else? Anyone wants to ask? Your comments will be there once the video is there. I know that. Okay. How to Yes. To be eligible for the certification, there is no problem, Akshay. If you're a student, we also have a credential that we give you, which is CFCS in progress. So suppose आप student हो, आप अभी तक certify नहीं हुआ है, तो for eligibility you need to have a BCom or MCom degree, whatever, I mean, or graduate or postgraduate. If you are still yet to graduate, तो भी आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ओनली थिंग इज कि आपको जो CFCS का क्रेडेंशियल है वो ऐसे मिलेगा कि CFCS इन प्रोग्रेस। तो जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आपको वो CFCS का क्रेडेंशियल एज अ प्रोफेशनल मिल जाएगा। बट देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट इफ यू आर एन अंडरग्रेजुएट। आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू विल गेट पॉइंट्स फॉर योर ग्रेजुएशन, यू विल गेट क्रेडिट पॉइंट्स फॉर योर वर्क एक्सपीरियंस। एंड अगर आपके पास कोई भी पॉइंट्स या क्रेडिट्स फॉर द एलिजिबिलिटी नहीं है, तो वंस यू एनरोल विद अस, you can go to our library and attend the webinars. जैसे ही आपने वो webinars attend करें तो आपको वो credit points मिल जाएंगे, which will make you eligible. So for registering, there is no eligibility that you require. Anybody can register. To take the exam, you have to have 40 credit points. Yes, Lakshay, I can't see your message now. Once again, I have to. Chaliye, koi nahi. Thanks a lot for I think taking Yes. that particular queries. Yeah. You were saying something. Yes. If you want to know about it, I can definitely help you. Ma'am, please tell about Placements after this course, Tushar, there are a lot of placements, Tushar, everywhere. A lot of recruitment. You can approach a lot of companies. You can, if you go to Naukri or if you go to any of these career portals, आप जाके गूगल कर लो फाइनेंशियल क्राइम, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आपको दिखेगा कि बहुत सारे जॉब्स लिस्टेड है, ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स आर लिस्टेड। तो आपको काफी ओपनिंग्स मिल जाएगी। मे बी अर्लियर द ओपनिंग्स आर मोर इन KYC, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग।
तो ये एंट्री लेवल जॉब्स हैं सब जगह, आपको वहाँ पे तो बहुत आसानी से आपको एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद देन यू कैन ग्रो इन योर करियर एंड ग्रो इन दिस प्रोफेशन। इफ यू आर सीजन 2-3 साल के बाद आपको और बेटर रोल्स और बहुत और बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस बॉर्डर और विद इन इंडिया वो भी मिल जाएंगे आपको। तो आपको किसी को भी समझना है कि इसमें क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है या क्या करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, एक सिंपल एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई भी पोर्टल, कोई भी जॉब पोर्टल पे जाकर एक सर्च कर दीजिए। जैसे आप सर्च करोगे फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट, सैंक्शन स्पेशलिस्ट, आपको दिख जाएगा there's a huge number of jobs that are there. That will speak about the demand for this. Simple as that. Okay, thank you. Anybody else? Acha, do we have a job posting on this particular AC, this website? The certificate, is there any job posting? We do have a job portal, Anurag ji, on the ACFCS site, but I'll be very honest that yeah, the job listings for India that are posted are very few. Okay. So from India perspective, I would not say it is very, but if you look at the domestic portals, कोई भी domestic portal आप देख लीजिए, Monster जो भी आपको देखना है, उनमें आप देखेंगे तो इतनी सारी job postings है for screening, customer screening, and so many job postings are there for every function. It's huge. Okay, fine. Okay, thank you. Okay. No, Tushar, I can help you, I can guide you, but I'm not cannot ensure you that I can provide you a placement. I can definitely guide you and I can definitely show you the path to seek a placement. My team can help you, but I cannot assure you. I think definitely like more queries will be there once we upload it. Anyhow, just to give you some input, क्योंकि जो आपके questions हैं, मैडम ने तो आपको बताया है. There she has told you many things to your queries. Just to give you a little bit perspective, जितने आप लोग काफ़ी लोग तो शायद interact करते हैं मेरे से. So I come from a complete corporate background. आप सबका मेन क्वेश्चन होता है जॉब का, और मेरा जो सेशन भी, अगर जो लोग जानते हैं, जितने भी सेशन मैं कराता हूँ, मेरा सिर्फ पर्पज ये रहता है वॉक द टॉक. तो मैडम ने तो खैर बता ही दिया, आई एम माई सेल्फ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. आई कुड हैव कंप्लीटेड द सर्टिफिकेशन बट इन व्यू ऑफ सम टाइम कंस्टेंट एनी हाउ. सो ऐसा नहीं है कि आपको मैं जो, ये तो यू नो अबाउट मी. So this is a certification I have taken, like I have taken the membership. Now important thing is the companies in which I have worked, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये जो आप B.Com कर रहे हो, M.Com कर रहे हो, जो कुछ लोग PhD भी अपनी कर रहे हैं, these are all qualifications on paper. आपको जॉब रेलेवेंट अगर अपने को बनाना है, जैसे आपका यूरो पास का सीवी बनवाया, जितने स्टूडेंट अभी आगे भी सुनेंगे, जो होता ही नहीं है. इवन सेंट स्टीफन, श्री राम कॉलेज जो यहाँ पे टॉप नॉच कॉलेज है, उनमें भी ये लोगों को नहीं मालूम है. तो आप सबका यूरो पास सीवी है. आई एम एड्रेसिंग टू दो जिन्होंने सब कर लिया है, और आप यूरो पास में आपका एक कवर लेटर वगैरह, तो यू हैव द नाउ दोज थिंग्स. लेकिन आपके सर्टिफिकेशन जो आपको जॉब दिलवाने में हेल्प करें, तो जो अमेजन है, बैंक ऑफ अमेरिका है, आई हैव वर्कड इन बैंक ऑफ अमेरिका. आई गॉट सिलेक्टेड इन अमेजन इन द बैंगलोर ऑफिस. दे डिड नॉट टुक इट. उसमें उन्होंने कहा द जॉब रोल इज अ लिटिल बिट लेस पर माई क्वालिफिकेशन, बट मे बी दैट इज अ स्मार्ट वे ऑफ सेइंग नो. एनी हाउ, so General Electric, GE Capital I worked, American Express I worked, and then HCL India, HCL America, then Deloitte Consulting I worked, EXL I worked. ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इनके ऑफिस में जाता था, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, यहाँ पे इनके बैक ऑफिसेज हैं, और उनके बैक ऑफिसेज में AML, KYC कंप्लायंस, फ्रॉड एनालिस्ट, कंप्लायंस एनालिस्ट, दिस इज समथिंग प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू. वहाँ पे 100 FT आपको शायद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, या वहाँ पे रिसोर्सेज, वहाँ मैसिव रिक्रूटमेंट होती है, खासतौर पे चेन्नई साउथ में तो काफ़ी पूरी फ्लोर्स हैं. और उनका जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है, दे स्टार्ट विद एनालिस्ट, देन मे बी एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, लीड एसोसिएट. आई हैव बीन थ्रू दीज पर्टिकुलर कैरियर प्रोग्रेशन. वहाँ पे कोई लंबी चौड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए, वहाँ पे आपके बड़े हाई नंबर्स नहीं चाहिए, जो यहाँ इंडियन सिनेरियो में रहता है. मेरा सिर्फ सोल पर्पज है हाउ टू मेक यू एम्प्लॉयबल, जो आपका भी शायद मेन कंसर्न होगा, जो सिंसियर स्टूडेंट है. तो ये कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम. एक होता है आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, जैसे इंडिया में बड़े सारे कोर्सेज हैं, उसमें कोई एंड ही नहीं है. एंट्री तो ओपन एंडेड है, एग्जिट उसमें कितने कर पाते हैं. फिर उनका कुछ अपना स्टडी मटेरियल होता है, कुछ आपको रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, उसका कोई एंड ही नहीं है. सिलेबस इतना वास्ट होता है. तो मैं आपको यही, जो मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी सर्टिफिकेशंस की, और जब मैंने देखा उसको इंडिया से कंपैरिजन करके, बाहर के जितने भी कोर्सेज हैं, खास तौर पे यूएस के, दे आर मोस्टली MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस. तो जैसे अब यूनिवर्सिटी में
मैडम एक्स्ट्रा शीट दे दीजिए, सर एक्स्ट्रा शीट दे दीजिए, कितनी एक्स्ट्रा शीट भरी, कितने आपने पेपरों में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखे, कितना आपने मगअप किया, कितना आपने वो पैरेटिंग की, उसको आपने रिप्रोड्यूस किया, वो सब बाहर नहीं है। तो जॉब्स बहुत हैं, मल्टीनेशनल जो मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया में अगर इस वक्त स्कोप है जॉब्स का, मल्टीनेशनल जितनी है यहाँ पे उसमें काफ़ी स्कोप है, या काफ़ी उसी में स्कोप रह गया है। गवर्नमेंट सेक्टर में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज देर इज़ वेरी लिमिटेड एंट्री। ओके, जितनी भी एंट्रीज हैं वो कंसल्टेंट हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनमें आपकी ये सर्टिफिकेशन हेल्प करेगी। सो प्लीज़ जो सिंसियर स्टूडेंट सुन रहे हैं, इसमें एक आपको भी मैडम ने फीस भी बताई, एक होता है आपने वन टाइम फीस दे दी, एजुकेशन लोन भी मैं आपको बताता हूँ, विद्या लक्ष्मी स्कीम। एक होता है आप लाइफ में 50 कोर्स कर लीजिए और आप अपने उसको पैसे को इधर उधर इन्वेस्ट एक होता है आप रेलेवेंट कोर्स कर लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यू गेट अ जॉब। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनमें कंटिन्यूइंग एजुकेशन असिस्टेंस पॉलिसी होती है, 30,000 50,000 रुपीज, तो उसमें आप अपना आगे भी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, गेट योर सेल्फ एम्प्लॉयड फास्ट, एटलीस्ट इन द इंडियन सिनेरियो। एम्प्लॉयमेंट में जब आप आ जाओगे, एक कंपनी क्या होती है, कैसे काम होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या AR AP, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किताबों में पढ़ते हो। आपकी एज में मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन उस वक्त ऑप्शन नहीं थी। अभी आप इन कंपनियों को ज्वाइन करने के लिए ये आपको सर्टिफाइड फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट, और अगर आपने ध्यान से सुना हो व्हाट मैडम वाज सेइंग, इसमें उन्होंने एक दिखाया था आपको व्हील, उसमें साइबर सिक्योरिटी, AML KYC, मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशन की हैं। तो जब मैंने इस सर्टिफिकेशन को देखा, उसमें मुझे जो सबसे USP लगा, सबसे अच्छा, इसमें सभी चीज़ें हैं जो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि जब आप इस एसोसिएट लेवल, एनालिस्ट लेवल पे अप्लाई करोगे, कंपनीज कैन टेक यू ऑन बोर्ड, और उसमें दे कैन पुट यू इनटू मल्टीपल रोल्स, तो आपका CV बहुत स्ट्रांग हो जाता है। डूइंग अ प्लेन BCom, एंड BCom के साथ आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इफ यू आर नॉट एबल टू गो टू सम बिग कॉलेज, नथिंग, नो इश्यूज। ये जो इंडिया में या दिल्ली में है ना, आपका नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, फैंसी कॉलेजेस, you do your BCom and supplement it with some certification, उसमें your certified financial crime is a big help। और ये बड़ी बड़ी MNCs हैं, जो मैंने आपको कुछ नाम लिए। दूसरा, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है इंडिया से बाहर जाने का, वो भी आपको आई कीप ऑन गाइडिंग हाउ टू गो अबाउट इट। दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन गिव्स यू दैट ग्लोबल पाथवे। आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, उसमें यू परफॉर्म वेल, इंटर कंपनी ट्रांसफर्स होते हैं, प्रोसेसेस की माइग्रेशंस होती हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड कंसीडर इट। जो मैंने आपको बोला, एक कोर्स में इन्वेस्टमेंट किया, अपने को एम्प्लॉय किया, और एक BCom किया, MCom किया, PhD की, उस कोर्स में एडमिशन ले लिया, मार्केट से बुक्स खरीदी, कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया, ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लिया, उसकी एग्जामिनेशन फीस दी। कहने को देयर आर मेनी थिंग्स, क्योंकि आई रियली वैल्यू द इंटरनेशनल एजुकेशन। इसमें एक मैडम ने आपको बताया एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में अभी आप शायद नहीं रियलाइज करते कितना सिंपल है। यहाँ पे जो अभी स्टूडेंट लॉग्ड इन भी नहीं है, वो नीचे अभी कहीं एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराने आए होंगे, किसी की फीस जमा नहीं हुई, किसी का नाम ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, किसी को स्टडी मटेरियल नहीं मिला, किसी के एग्जामिनेशन का सेंटर ऐसा पड़ गया जो उसके घर से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने खुद भरना है, और बड़ा ट्रांसपेरेंट है। आपने ग्रेजुएशन किया, उसके पॉइंट्स हैं, आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, उसका पॉइंट है, आपके रेफरेंसेस, और एप्लीकेशन आप सेल्फ अपलोड करके, एंड यू कैन इमीडिएटली सी कि मेरा एडमिशन हो गया। जो यहाँ पे आपको इश्यूज होते हैं, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। दूसरा, मैडम ने अच्छी चीज़ क्या बताई, पेपर दिया, हाथ के हाथ रिजल्ट। यहाँ पे आपके साथ क्या इशू होता है, पेपर दिया, रिजल्ट का ही नहीं पता कब आया। रिजल्ट आया तो रिजल्ट में, सर मैंने तो पेपर दिया था, मेरी एब्सेंट लगी हुई है, मेरे को उसमें एसेंशियल रिपीट दे दिया, मेरी कंपार्टमेंट कर दी। यहाँ पे अगर आप एक स्टडी बुकलेट पढ़ लेते हो, ये सारी मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, जो US का है या UK का, एनी हाउ, इसमें इनका एक स्टडी मटेरियल होता है, और वो स्टडी मटेरियल अगर आप पढ़ लेते हैं, यू आर श्योर टू गेट थ्रू। यहाँ पे जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, आई डोंट नो हाउ मेनी एग्री, कि हेयर द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक यू पास, देयर द ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट योर एजुकेशन। इसमें मैडम ने एक अच्छी चीज बताई, इसमें जितना भी स्टडी मटेरियल, उसमें वीडियोस हैं। वीडियो ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। एक होता है आप बुक्स पढ़ते रहो, लाइनें खींचते रहो, खास तौर पे जो DU का स्टडी मटेरियल है, बिल्कुल टोटली लाइक ब्लैक एंड वाइट, टोटली नॉन इंटरेस्टिंग। बट व्हेन यू लुक एट दीज वीडियोस, और एक 70 घंटे मैडम ने बताया, हर चीज इज स्पेसिफिक। जो सिंसियर हैं, जो समझना चाह रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। 70 hours ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट इंस्टेंटेनियस, remote proctoring, or like in center you can go there. There are different companies which recognize this certification. Just stating I am a BCom MCom and stating I am a BCom with this particular certification makes a huge difference. And personally भी आपको अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी
once you are certified you will have knowledge in your personal experience लाइफ में पता नहीं कहाँ पे एक फ्रॉड किस टाइप के इश्यूज आते हैं you will be more equipped to handle those situations to your international career, your national and placement. So definitely LinkedIn, मैं तो बल्कि LinkedIn कहूँगा, LinkedIn पे compliance, fraud एक बार आप टाइप करो jobs search में and just see कितनी बड़ी बड़ी MNC बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ये क्रेडिट सुइस, मेरिल लिंच, गोल्डमैन सैच, E&Y, KPMG और एनालिस्ट लेवल पे दे आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर अदर थिंग्स. आपकी सर्टिफिकेशन विल गेट यू एन एंट्री ओवर देयर जो आपकी एज में बहुत लोगों को नहीं पता होता. सो दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू यू and I think anybody else has anything to say. So maybe otherwise world bank में I'm a live product in front of you. I मेरा जो जितनी भी मैंने आपको कंपनीज के नाम लिए उनमें सब में कॉमन डिनोमिनेटर कंप्लायंस था. तो वर्ल्ड बैंक भी आई मेड इट बिकॉज आई वाज फ्रॉम अ कंप्लायंस बैकग्राउंड and there were many people competing with me who are more qualified than the number of certification, but I had made some career moves which were a little bit like a little bit different from my compatriot anyhow. So but my strong suggestion is compliance में एक और चीज कुछ स्टूडेंट फ्रॉम माय अमेरिकन एक्सप्रेस डेज कंप्लायंस एक स्पेशलिस्ट जॉब होता है. खासतौर पे जी कैपिटल का मुझे ध्यान है तो कई लोगों को स्पेशलिस्ट जॉब जैसे स्टैंड अलोन स्पेशलिस्ट तो एक ऑपरेशंस होता है. ऑपरेशंस में AR AP फिक्स्ड एसेट रिपोर्टिंग और एक जब मैं भी आपके यंग एज में मैं देखता था इंटरनल ऑडिट वाले लोग आ रहे हैं बड़े स्पेशलिस्ट हैं. दे कम दे रिव्यू द प्रोसेस एंड दे जस्ट गो अवे. उनका एक अलग क्यूबिकल है, एक उनको अलग जगह दे रखी है. सो प्रिटी स्मार्ट गाइस. तो आई यूज्ड टू थिंक हाउ टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. ना तो उसमें कोई ऐसे सर्टिफिकेशंस थे ना प्रो. आई एम टॉकिंग ऑफ 94 97. सो बट यू हैव दैट ऑप्शन. सो इफ यू वांट टू बी अ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट से क्या होता है कंसल्टिंग में यू कैन बी टू इनटू ऑल काइंड ऑफ प्रोसेसेस. एक प्रोसेस से हर प्रोसेस को आप इम्पैक्ट करते हो. तो जी कैपिटल में आई वाज लुकिंग आफ्टर द रोमानिया सेंटर, हैदराबाद ऑफिस एंड द यूएस ऑफिस बिकॉज कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड इन एवरी फंक्शन. तो यू विल बी अ स्पेशलिस्ट. एक ये प्रिवेंटिव रोल है जो मैडम ने अभी बताया. ये जो सर्टिफिकेशन है दिस इज अ प्रिवेंटिव क्वालिफिकेशन. आप एक अगर अपनी अपनी जो आपकी पर्सनल कहते हैं ना आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ethics, and you will help the company to be compliant so that they don't end up into penalties like those some kind of non-compliance issues. And there are various companies, they have first line of defense, second third line of defense. So it's a pretty specialist role. तो जो सभी स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न रहता है जॉब्स मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसी के लिए आई वाज ट्राइंग टू गिव यू प्रैक्टिकल इंसाइट्स कि ये सब चीज़ें आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय ओन सेल्फ. एसोसिएट सीनियर एसोसिएट लेवल पे बहुत रिक्वायरमेंट है और उसके लिए यू रिक्वायर सर्टिफिकेशन योर BCom MCom. और इसमें जहां तक मेरी उम्मीद है इसमें इट इज अ न्यूट्रल सर्टिफिकेशन कि आपको BCom ही होना है. खासतौर पे इफ आई एम रिमेंबर इन सम अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे यूएस में यू डोंट हैव टू बी अ BCom ओनली. इफ यू आर फ्रॉम अ BA बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम एनी अदर BSc बैकग्राउंड, यू आर गुड टू गो. तो दैट इज अ गुड पार्ट एंड यू डोंट हैव टू बी अ ग्रेजुएट. यू कैन बी अ ग्रेजुएट लेटर ऑन बट यू कैन कंप्लीट इट. सो वेरी फ्लेक्सिबल ऑप्शन which is not available like maybe in the current like Indian options. Anybody has any other questions? Otherwise, we will wrap it up. Any concluding thing you want? Anybody wants to raise the hand? Anybody has to share anything? I think it's okay, fine. So Palvi ji, thanks a lot. I think for this very informative session, and I think I'll be uploading this video on our entrepreneurship ECell channel. So we have around 1500 subscribers on that. That's a subscriber, but usme ad hoc so many reviews happen, views happen. So and anyone who gets in touch with me, definitely like I'll be in touch with you. And we have other centers. This particular session I had done for the north, like the main office, main university HO. But we have a South Delhi center, North Delhi center, East Delhi center. That can also be done. So I thank you for your time, and I thank all the participants for making their time during their work day in the university. And so thank you, ma'am. Any concluding remarks you want to say? Thank you. Thank you so much, Anurag ji. It was really a pleasure to host this event. And also on the chat box, I have shared the links for the CFCS portal for the crypto certification. So if anybody is really interested, they can just read through the FAQs and everything are also there on the portal. And of course, apart from touching base with us, this is also a very good resource for you. So wishing everybody good luck for a very good flourishing career ahead. And thank you once again. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you. Thanks. Thanks to all. Yeah. Happy Diwali to everybody in advance. Have a great day. Yeah. Sure. Thank you.